Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So next topic is going to be why we need tax reforms, and here we'll be discussing about what have been certain tax reforms which have been recommended and कौन से implement हो चुके हैं कौन से implement नहीं हुए हैं. So we had this TARC, which is the Tax Administration Reforms Commission. So their recommendations and what is the status about their recommendations. So उन्होंने बोला कि एक single knowledge एनालिसिस और इंटेलिजेंस सेंटर होना चाहिए फॉर बोथ द बोर्ड्स, indirect taxation and CBDT जो direct taxation board है, and its role should be recognized and used for the policy formulations. So this has been implemented. Second, pre-fill tax returns होना चाहिए. तो pre-fill tax return should be provided to all the individuals. Taxpayer will have the option to accept the tax return or as it is, or you can modify it also. तो थोड़ा technical है, but this has been also implemented. Then online tracking of the dark or the grievance and applications for the refunds. So this is about again कि one single platform होना चाहिए for the grievance redressal. So this has also been implemented. So there is this ask software which was implemented by the CBDT, Central Board of Direct Taxation. So a proper mechanism है which is working. So how the FAS scheme, it prevents the malfeasance. So we saw that people's honesty and fundamentally reforming the taxation system to make it more people centric reflects the government's vision of a new governance model. So we are seeing here the shift that it should be people centric, mean ki in terms of ease of filing the tax returns or the ease of even getting back the tax rebates. So that is one of the measures जो हम बोल सकते हैं इसका part component है people centric में. और we can talk about कि efficiency कैसे हम improve कर रहे हैं. Then the future of tax reforms will be based on trust, transparency and technology. So it's important कि ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट ज्यादा जनरेट होना चाहिए. ट्रांसपेरेंसी कैसे प्रमोट कर रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, एंड इवन टेक्नोलॉजी हाउ इट इज हेल्पिंग अस इन इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इवन व्हेन इट कम्स टू ग्रीवेंस रिड्रेसल also. So faceless e-assessment system, which is FAS, this was implemented, and faceless appeals can also be done. Taxpayers charter है, as we talk about charter of citizens. So ये कुछ transformational initiatives हैं which were taken. Again objective था greater efficiency होनी चाहिए, transparency, accountability in tax administration. So these keywords can be noted down. FAS system 2019 में हमने launch किया using artificial intelligence for automated and randomized allocation of the cases, so that even in again grievance redressal भी यहाँ पे conflict of interest नहीं होना चाहिए. तो that is why randomized allocation of cases use किया गया. So this can be noted down again कि artificial intelligence हम income tax filing system या income tax administration में भी how it is helping us. So the it completely changes जो concept है territorial jurisdiction का, makes it more dynamic so that an assessment of taxpayer who's based in Mumbai can be concluded anonymously by a tax authority which is based in Kolkata also. So this is possible through technology, through the faceless system, faceless assessment system जो launch किया गया. So by eliminating frequent personal interactions की अब हमें जरूरत नहीं है because it is faceless and between taxpayers or tax department. So this FS system and the scheme significantly minimizes the malfeasance. It reduces the chances of, we can say, corruption, saves the precious time and resources. So it is all about efficiency. Then another example is NEC, the National E-Assessment Center. So it ensures taxpayers sufficient time here to provide information instead of responding to last-minute demands for the information. And the Central Board of Direct Taxes is directed all assessments enforced will be passed by the NEC except for the centralized group cases. Apart from this, even as the government it works towards addressing potential challenges और क्या बच गए जो address करना important है, so few areas will be critical to realize the full benefit of this scheme. So key among them is जो voluminous online submissions भी हो रहे हैं and explanation of the intricacies of the business models. So इस चीज की because again this would be requiring time, तो इन वॉल्यूमिनस केसेस को कैसे हम और क्विकली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, maintaining again the transparency, and it will require quality and clarity in communication.
सो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो अननेसेसरी लिटिगेशन है उसको कम करने की जरूरत है। जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है पर्टिकुलरली, दे विल नीड टू इक्विप देमसेल्व्स टू मेक यूज ऑफ दिस एफए। सो वहाँ पे हम बात कर सकते हैं अवेयरनेस जनरेशन की, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं। सो दिस इज थिंग। एंड सो डिजिटल प्रोसेस जो है, इट इज़ नॉट कि कंप्लीटली मशीन के ऊपर ही वर्क कर रहा है। जैसे हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि वहाँ पे भी वी रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस एट द सेम टाइम, बिकॉज इट कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन कॉग्निटिव स्किल्स। सो इन टर्म्स ऑफ यू कैन से एफिशिएंसी एंड क्वालिटी, एआई हेल्प कर रहा है, बट अगेन जो वॉल्यूमिनस केसेस फाइल हो रहे हैं, जो इवन फाइलिंग्स हो रही हैं इनकम टैक्स की, सो वहाँ पे भी वी स्टिल नीड ह्यूज कैपेसिटी बिल्डिंग, रोबस्ट सिस्टम होना चाहिए टू सपोर्ट दैट. So the multiple units, while providing functional specialization, they must maintain close and effective communication. So even within the authorities also हम यहाँ synergy और cooperation coordination की बात कर रहे हैं. सो अभी तो अगर हम देखते हैं जो केसेस आते हैं फेस के थ्रू, दे आर वी कैन से स्मॉलर केसेस हैं, इतनी बड़ी कोई लार्जर अमाउंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो एक्चुअल जो टेस्ट होगा इस सिस्टम का, दैट वुड बी व्हेन वी सी कि हाउ इट वुड बी डीलिंग एंड रिस्पॉन्डिंग व्हेन देयर आर लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स केसेस, लाइक ट्रांसफर प्राइसिंग के अराउंड केसेस हैं, अंडरटेकन लिटिगेशन इज रिड्यूस्ड. So although assessment of non-residents with the international charge, that will currently not be faceless. तो जब हम NRIs की बात करते हैं तो it is not faceless. तो वहाँ पे भी we need to come up with a faceless system. And other recommendations, tax और growth, हम taxation, tax revenue and GDP growth की बात कर रहे हैं. तो one concept we often talk about is the Laffer curve. So that is also directly related to tax and the growth. So revenue neutral growth oriented tax reform means revenue neutral growth. Tax reforms करना है, but वो जो reforms होंगे revenue के ऊपर कोई उसका negative impact नहीं होगा, revenue के ऊपर उसका कोई impact नहीं होगा. It would therefore shift the part of the revenue base from income taxes to less distortive taxes. But यहाँ पे बस ये हम ये base shifting की बात कर रहे हैं कि जो regressive taxes हैं उससे less distortive taxes जो है वहां से shift होके it would be getting shifted to जहाँ पे distortion या negative effect कम है, we can say progressive taxation के towards it would be shifted, but revenue neutral growth रहेगी, revenue ज़्यादा increase नहीं होगा. So this is one thing. So यहाँ पे shift the burden of taxation from income to the consumption or the residential property, and to improve the design of tax regime by broadening the tax base, lowering the rate of taxation. सो एक्सटर्नैलिटी, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो कम करने की बात की जा रही है. सो इट केवियट जो है नेगेटिव इम्पैक्ट, जो लूप होल है, दैट शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ टैक्सेशन टुवर्ड्स कंजम्पशन एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस मे ओनली बी डिजायरेबल व्हेन दीज टैक्सेस रिफॉर्म्स आर देमसेल्व्स वेल डिजाइन. तो जो जैसे अगर हम बात करते हैं डिजाइनिंग ऑफ टैक्सेशन सिस्टम की, तो जीएसटी आ गया. जीएसटी की हमने बात करी थी, व्हाट आर द पेंडिंग रिफॉर्म्स दैट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड. सो यहाँ पे वो चीज आ सकती है. फंडामेंटल टैक्स रिफॉर्म मेक्स रैडिकल चेंजेस टू टैक्स बेस एंड द टैक्स रेट. So यहाँ पूरा overall composition of tax burden would be shifting and changing. The taxpayers charter formally in place. India joins the countries with Australia, Canada. So यहाँ पे भी सब इन countries में भी tax charter है. So India also joins this group जहाँ पे we are having a proper taxpayers charter. Although charter is not legally enforceable, but again जब हम बात करते हैं in terms of interpretation, in terms of guiding, in terms of the ethics and the morals, the principles and the values which are followed by an authority or an institution, that is guided in these are mentioned in the charters. So और क्या reforms? India needs tax reforms to boost the small firms, says नीति आयोग member. So small firms की और यहाँ पे हम बात करें formalization हम और कैसे कर सकते हैं so that tax revenue हम और increase कर पाए. So India needs to simplify the tax regime when we talk about compliance burden कम होना चाहिए. And small and medium businesses जो हैं they account for nearly a quarter of India's economy. So they are having a substantial share and impact when we talk about the GDP growth.
So simplifying the tax rate would add to the efficiency of the MSME. So initially हमने बात करा जब implement हो रहा था GST, so उस time पे भी the MSMEs were majorly impacted. Then small and the medium businesses, they account for over a third of the local manufacturing. When we're talking about specifically time period of expanding, of promoting the growth in the manufacturing sector, so special focus upon MSME is definitely required as far as the taxation and the administration is concerned. So more than 40% of जो इंडिया के exports हैं, they are driven by MSME sector, specifically small and medium, not large. So significant role in generating jobs भी वो एक important role play करते हैं. So India, world's fifth largest economy, one of the fastest growing भी है, aims to boost manufacturing capabilities, increase the presence in global supply chains. So to that end, we are having PLI schemes and the industrial policy to boost the manufacturing. So we also say when part of reforms की new industrial policy आनी चाहिए. So Indian government is also reviewing the PLI scheme to improve its implementation at the same time. So let's keep it this much, and this particular part in the video, we can take up the doubts now. Are there any doubts? So यहाँ पे हमने मेजरली टैक्स रिफॉर्म्स की बात करी, जो TARC से हमने स्टार्ट किया, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमीशन ने जो रिकमेंड किया, और क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए MSME सेक्टर में, और क्या सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, और कैसे हम अपना टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं. So these were the areas that we've covered in this video, and thank you so much for joining us on Ansarkari. Do subscribe to our channel.